Of the 8 wars I ended, I would say 5 or 6 were ended because of tariffs. If you take a look at India and Pakistan, they started to fight. They're 2 nuclear nations. They were shooting each other. 8 planes were shot down. And I said, listen, if you guys are going to fight, I'm going to put tariffs on you. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध को रोकने का श्रेय खुद को दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि तारिफ की धमकी से उन्होंने इस युद्ध को रोका। अब उन्होंने इस कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ दिया है। दोनों देशों ने 8 विमान गिराए थे। ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मई में उनकी दखलंदाजी से भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर या पूर्ण रूप से युद्ध नहीं हुआ। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान युद्ध में 8 विमान गिराए गए। पहले 7 थे, लेकिन अब 8, क्योंकि एक जो क्षतिग्रस्त हुआ था उसे अब गिनती में जोड़ दिया गया है। ट्रंप ने आगे कहा, उन्होंने टैरिफ की वजह से 5-6 युद्ध रोके हैं। ट्रंप के इस नए बयान के अनुसार उन्होंने दोनों देशों के बीच इसे सुलझाने के लिए टैरिफ की धमकी दी। टैरिफ के बिना मैं ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि भारत इसी तीसरे पक्ष को यानी ट्रंप की भूमिका को लगातार नकारता रहा है। मई में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार आतंकी ठिकानों पर छापा मारा, जिससे दोनों देशों में कई दिनों तक तनाव रहा। ट्रंप का दावा है कि 9 मई को भारत और पाकिस्तान से ट्रूस की बात हुई और अगले दिन दोनों ने सीजफायर की घोषणा की। बुधवार को फ्लोरिडा के मायमी में एक इवेंट में ट्रंप ने कहा, व्यापार कटौती की धमकी से नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने इस लड़ाई को रोक दिया। पीटीआई के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मैं दोनों के साथ व्यापार डील कर रहा था। फिर एक अखबार के फ्रंट पेज पर पढ़ा, मैंने सुना वे युद्ध करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सैन्य संघर्ष में कुल 8 विमान गिराए गए। पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में भी ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को टैरिफ की धमकी देकर ही परमाणु युद्ध रोक दिया, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर दोनों पक्षों के डीजीएमओ के बीच स्थापित सैन्य संचार चैनलों से ही हुआ। भारत के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं। पाकिस्तान से सभी मुद्दे द्विपक्षीय तरीके से सुलझाए जाएंगे, बिना किसी तीसरे पक्ष की दखल के, ऐसा मंत्रालय ने दोहराया। Are you moving forward with any new tariff announcements before a decision from the Supreme Court? This is the best one. And we can do other things, but they're slow by comparison. It's like as an example, with the 100%, I was able to do it instantaneously when we were threatened by the rare earths, as you know, the magnets. And I did it instantaneously. It was a matter of seconds. And it was a matter of seconds that I got a phone call, let's work this out. We would have had not nearly the defense that we had. It would be a shame. It would be somewhat catastrophic for our country, I have to be honest with you. I don't want to get too much involved, but what we've done, we're taking in hundreds of trillions of dollars. If you take a look at the numbers we have, we're at $17 trillion right now. We're going to be at $21 trillion, about $21 trillion by the time I finished my first year. Biden, as an example, the Biden administration was at less than $1 trillion for 4 years. We're going to be at 21 trillion for 1 year. In the history of the world, there's never been a country that's done that. Not China, not the U.S., not anybody. And a lot of that is because of the tariffs and the fact that the president is a competent president that knows how to use them. And I use them for national defense. Of the 8 wars I ended, I would say 5 or 6 were ended because of tariffs. I'll give you an example. If you take a look at India and Pakistan, they started to fight. They're 2 nuclear nations. They were shooting each other. 8 planes were shot down. There was 7, now it was 8 because the one that was sort of shot down is now abandoned. And 8 planes were shot down. And I said, listen, if you guys are going to fight, I'm going to put tariffs on you. And they both went, they were not happy about that. And within 24 hours, I settled the war. If I didn't have tariffs, I wouldn't have been able to settle that war. So it's great national defense, and you have to be quick moving. You can't wait around for months and months while you're doing studies and you're doing all of this, or go back to Congress. Look at Congress. We can't even get a continuation from Congress. Think of that. How would you have to go back to Congress you have to do this spur of the moment? Because just so you understand, we're here at spur of the moment.
You know, other countries have used tariffs that absolutely they would have destroyed us. If I didn't come along, our country would be destroyed right now. The tariffs have made us rich in terms of national security. They've made us secure. And you know, if you have economic strength, that's also, if you have a lack of economic strength, that's national security also. But we have great national security because of those tariffs. So I think it would be devastating if we lost that road. Issues are ruling. It could be several.